Hello, everyone. Good afternoon. Good afternoon. So, we are live again on YouTube, and in this particular video, I will be talking about revision strategies and how you can utilize the next 10 days before your exam preparation. So, if you can see me and if you can hear me, I would want you guys to put that in the comment section below. On my phone, I'll just check. Right. So I can see 13 participants have joined, and I would really, really love if you guys can. Okay, yes, so comments are coming in, and I can see Nilofer, Rajendra, Gangadhar, Shreya, Yashi. Good morning, Yashi. Shreya, good afternoon. Kanu, good morning. Akash, hi. So, yes, you guys can hear me and see me. If that's working, if you can just give me a thumbs up saying that you guys can hear me. Happy Navratri, Neha. Hi, Annie. Hi, Asif. Hi, Alkesh. Oh, yes. Asif says that you guys can hear me. Great, great, lovely. Okay, so now in this particular YouTube live, what I'll be doing is I don't want this to be a one way conversation wherein I am just talking and sharing my views, because that is what I generally do on my other YouTube videos also, which are recorded. So in this video, I would want to take up one by one questions that are asked by all of you. सो जिसके पास भी जो क्वेश्चंस है रिलेटेड टू द अपकमिंग नेट एग्जाम, आपके रिवीजन में आपको क्या दिक्कत आ रही है या किस तरीके से आपको रिवाइज करना चाहिए, इस बारे में आपको कुछ भी पूछना है, सो यू कैन जस्ट ड्रॉप इन योर कमेंट्स. आई कैन सी द कमेंट्स हियर. Abhirami says, yes, ma'am, you're audible. Ankita says, hi, ma'am. Kiara Shri says, good morning. Rajendra says, Gandhi Jayanti ki shubhkamnaएं. Oh, yes, this reminds me. Happy Gandhi Jayanti to all of you. I am a big, big follower of Mahatma Gandhi. And this morning I was listening to Vaishnav Janto Tene Kahiye, which was Gandhi ji's favorite song. And, when I think about Mahatma Gandhi, I just can't like feel that awe. I can't like just sit back and not feel that awe that, okay, a man that great could have ever walked on this earth. Looking at his principles, his values, today is the day when we need to bow down and we need to, tell ourselves that if we can just pick one little quality from that man and try to imbibe that in ourselves, that would be a great tribute to the father of the nation. So that is my request to all of you, that just sit back today and try to take that one particular quality which you would like to imbibe in yourselves, and I am pretty sure that those small qualities and those small improvements will take you to great height. Okay, so now that we have talked a little bit about our beloved Mahatma Gandhi, it's time to look at certain questions. So Shreya says, how to revise literary theory. Okay, Shreya, so I'll try to answer that question very quickly. लिटरेरी थ्योरी को रिवाइज करने के लिए देर आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. सबसे पहले आपको एक एक थ्योरी लेना है. फॉर एग्जाम्पल, यू टेक फॉर्मलिज्म, यू टेक स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शन, मार्क्सिस्ट. ओके, सो ऑल आर दीज डिफरेंट थ्योरीज. यू हैव टू टेक वन पर्टिकुलर थ्योरी. उस थ्योरी का बेस पढ़िए सबसे पहले कि वो थ्योरी एक्चुअल में कहती क्या है, कि स्ट्रक्चरलिज्म की मेन आइडियोलॉजी क्या है. स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स जो थे वो सारे लोग सिमिलर थॉट सोचते थे, तभी वो लोग एक थ्योरी की ब्रांच के अंदर थे. तो वो इन सबके सिमिलर थॉट्स क्या थे, आपको ये समझना है. फॉर एग्जाम्पल, साइंस सिग्निफायर, ये एक मेन बेस है स्ट्रक्चरलिज्म का. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड स्ट्रक्चरलिज्म विदाउट अंडरस्टैंडिंग साइंस सिग्निफायर, मीनिंग, हाउ दे टॉक अबाउट डेथ ऑफ द ऑथर, all these concepts. So सबसे पहले आपको ये पढ़ना है. Second is you need to know all the theorists who are in that particular section. For example, स्ट्रक्चरलिज्म में अगर 6 या 7 थियरिस्ट हैं, उन 6-7 के आपको नाम पता होने चाहिए. फर्डिनांड de Saussure है, रोलैंड बार्थ है, इन सब के आपको नाम पता होने चाहिए. साथ में इनकी जो फेमस बुक्स हैं, उनके नाम पता होने चाहिए. दैट्स इट. आपको लिटरेरी थ्योरी के रिविजन की तरफ और कुछ भी नहीं करना है. आपको सिर्फ थ्योरी का बेस पढ़ना है, जितने टर्म्स एसोसिएटेड है एक थ्योरी के साथ में, जैसे डेथ ऑफ द ऑथर हुआ, साइन एंड सिग्निफिकेंस हुआ. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मार्क्सिज्म, सो वी नीड टू नो कि कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बोला क्या था जिससे मार्क्सिज्म स्टार्ट हुआ. सो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए. एंड फिर आपको
एक लिस्ट बनानी है जिसमें राइटर्स के नाम होने चाहिए, व्हिच इज़ अवेलेबल ऑन arpitakarwa.com फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फुल कोर्स सिलेबस में जाइए वेबसाइट पे, यू विल फाइंड मॉड्यूल नंबर 7 लिटरेरी थ्योरी। उसमें जाके यू कैन गेट द लिस्ट ऑफ ऑल द थियरिस्ट एंड आपको उसके इंडिविजुअल वर्क्स जो है वो गूगल करने हैं। अगर आप मेरे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है तो मैंने आपको सब कुछ बता ही रखा है, यू हैव नोट्स फॉर ईच ऑफ देम, तो आपको और कुछ नहीं करना। बट अगर आप ऑनलाइन कोर्स के पार्ट नहीं हैं, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। Okay, so I think Shreya, I've answered your question. Moving on to the next question. Just a second. काफी सारे कमेंट्स आ गए हैं। आई हैव जस्ट लॉस्ट द ट्रैक कि मैंने कहाँ पढ़ा था। राइट, या आई कैन सी दैट नाउ। ओके, then Angel Pandey Yashi says, ma'am, how many marks obtained out of 300 for clearing UGC NET JRF exam? So यशी, बहुत सिंपल सा फिलॉसफी है। आपको 65% एम करना है अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं एंड यू आर एमिंग फॉर जेआरएफ। ओके, सो 65% क्या हुआ? अगर आप 300 को देखते हैं तो समवेयर अराउंड 175 180 मार्क्स is what you should be aiming for. That is a good decent score, but I would still suggest कि आप 200 एम करके चलिए। 200 एम मीन्स अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात करें तो 200 मार्क्स मीन्स डायरेक्टली 100 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। सो आपको पेपर 1 में से 35 क्वेश्चन सही करने हैं एंड पेपर 2 में से 65 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। सो अगर आप ये रेशियो लेके चलते हैं, इट्स अ वेरी गुड रेशियो, आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। आपके मॉक्स में भी आपको यही यही ट्राई करना चाहिए कि आप 100 क्वेश्चन सही कर पाएँ पेपर 1 एंड पेपर 2 से। गाइस, आल्सो दिस रिमाइंड्स मी, arpitakarwa.com की जो वेबसाइट है courses.arpitakarwa.com, वहाँ पे हमने अभी रिसेंटली 3 फ्री कोर्सेज लॉन्च करे हैं। क्वेश्चन बैंक फॉर पेपर 1, क्वेश्चन बैंक फॉर पेपर 2 एंड द द प्रीमियम वीडियोज एंड पीडीएफ्स। सो आपको कुछ एनिमेटेड वीडियोज हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं सो दैट यू कैन रिवाइज इन द लास्ट फ्यू डेज। सो जो प्रीमियम वीडियोज एंड पीडीएफ्स का फ्री कोर्स है, दैट इज एक्चुअली अ कोर्स टेकन फ्रॉम आवर मेन कोर्स। सो अभी हमने अपना जो कोर्स है उसको काफी बेटर बनाया है। जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसके अंदर वी स्टार्टेड पुटिंग इन एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स। दैट वाज लाइक माय ड्रीम कि मैं स्टूडेंट्स के साथ में लिटरेचर को एनिमेटेड वे में प्रेजेंट कर पाऊँ एंड दैट इनिशिएटिव ऑफ माइंड इज गेटिंग fulfilled with the grace of God. So एनिमेटेड वीडियोस अब आपके साथ दिए जाएंगे ऑनलाइन कोर्स में। उनमें से कुछ वीडियोस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कराए हैं सो दैट लास्ट मिनट उनको रिविजन में थोड़ी हेल्प हो। प्लस वी हैव आल्सो स्टार्टेड अ व्हाट्सएप ग्रुप व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू पिंग or like drop a WhatsApp message on our main number, official number, that is 7976603731। मैं लिख के भी दे देती हूँ। यस, सो दैट्स द व्हाट्सएप नंबर। आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें मैसेज करिए, वी विल ऐड यू इन अ फ्री ग्रुप। उसमें हम रोज लिटरेचर के क्विक रिवीजन के पीडीएफ्स एंड इमेजेस शेयर कर रहे हैं जिसमें क्या क्या चीजें आपको लास्ट मिनट ध्यान रखनी चाहिए, वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो प्लीज इंश्योर दैट आप इस चीज का फायदा लें। ऑल्सो आज ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग वेबसाइट पे जाएं, क्वेश्चन बैंक जो है उसे देना चालू करें। जो क्वेश्चन था यशी आपका कि 300 में से कितने मार्क्स लाने हैं, आप असेस कैसे करेंगे? यू नीड टू हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देने मिले एंड आप एनालाइज कर पाएँ। सो उसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं। सो प्लीज टेक दैट take that little time from your busy schedule and do sit for the mock test. Okay. Then we have Sultan saying that, ma'am, is there 3 hour window open for both papers or I have to complete paper 1 and then window for paper 2 will open? No, दोनों के लिए आपको विंडो ओपन रहेगी। 3 आवर्स में आपके ऊपर है, आप पहले पेपर 1 करें, पेपर 2 करें, दोनों को साइमल्टेनियसली लेके करें, या फिर अगर आपको ज्यादा टाइम पेपर 1 को देना है, आप पहले 1.5-2 घंटा उसे दें एंड देन यू शिफ्ट टू पेपर 2। बट आइडियली आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप 2 घंटा पेपर 1 को दें, बिकॉज आपको वेटेज भी देखनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो वेटेज है वो पेपर 2 को ज्यादा है, तो आप उसे एटलीस्ट 1.5 घंटे का समय दें। ओके, मूविंग अहेड। राइट,
अब मैं सीक्वेंस में चल रही हूँ, तो आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो नीचे आते जा रहे हैं, तो हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन डाला हो और मैं अभी तक उसे आंसर नहीं करी जस्ट बिकॉज़ वो नीचे है। सो आई एम मूविंग सीक्वेंशियली। मैं सबसे पहले जिन लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन्स डाले थे, आई एम आंसरिंग देम। आल्सो आई माइट नॉट बी लुकिंग एट द कैमरा मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज़ मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन्स पढ़ रही हूँ, सो आई एम रियली सॉरी इफ अगर मैं आपसे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही। बट आई एम एक्चुअली विजुअलाइजिंग कि आप लोग सामने बैठे हैं एंड मैं आपसे बात कर रही हूँ। ऑल्सो विजुअलाइजेशन रिमाइंड्स मी ऑफ वन इम्पोर्टेंट थिंग कि आप लोगों को सबको मैंने एक चीज़ बोली थी पिछले यूट्यूब लाइव में दैट यू गाइज़ आर गोइंग टू डू विजुअलाइजेशन मेडिटेशन जो arpitakarwa.com के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। जस्ट नीड टू टाइप अर्पिता करवा मेडिटेशन, यू विल गेट दैट वीडियो। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आप सब में से कितनों ने ट्राई किया एंड हाउ बेनिफिशियल वाज दैट। आई रियली रियली वांट टू नो। एंड अगर आप में से किसी ने ट्राई नहीं किया है तो प्लीज आज इस यूट्यूब लाइव के बाद जाइए, 10 मिनट का समय लगेगा, वो मेडिटेशन जरूर से करिए। इन लास्ट के 10 दिन में आपका मेंटल स्टेट एक गेम चेंजर की तरह प्ले करेगा। सो प्लीज इंश्योर दैट अपने दिन का 10 मिनट निकाल के आप रिविजन को टाइम देते हैं, वैसे ही मेडिटेशन को भी टाइम दीजिए। सो दैट ऑन द डे ऑफ द एग्जाम यू आर सो कॉन्फिडेंट कि अगर आपके सामने स्क्रीन पे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको नहीं पता, तो आप डिसहार्टन ना हो जिसकी वजह से आगे का पेपर ना बिगड़े। आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर पाए एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर पाए जो आपको बहुत अच्छे से आता है, राइट? ओके, सो नाउ मूविंग अहेड। Okay, so Infotech says, ma'am, I want previous year papers of NET UGC JRF. I would like to tell you that previous year papers free of cost arpitakarwa.com पे available है। आप जाइए, past year papers का section है website पे, सारे question papers available है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, question bank एक free of cost NT interface को mimic करते हुए हमने बनाया है, जिसमें just like एनटीए के एग्जाम हॉल के सामने आपकी जैसे स्क्रीन आएगी, सेम वैसी ही स्क्रीन आपके सामने अभी आएगी। आप टाइमर लगा के 3 घंटे वो टेस्ट दे सकते हैं। सो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है इन्फोटेक। अंकिता राय सेज, मैम प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स। अंकिता देखिए, बिगिनर्स के लिए आई वुड सजेस्ट यू, सबसे पहले यू शुड नो द सिलेबस, द एंटायर सिलेबस। arpitakarwa.com की वेबसाइट पे आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, आप एक बार पहले उससे गो थ्रू करिए एंड देन यू शुड स्टार्ट वन राइटर, लाइक वन बाय वन ईच ऑफ दीज राइटर्स। ऐसा मत करिए कि आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करें। बिगिनर्स के लिए एक बहुत सिंपल एडवाइस मैं दूंगी, डोंट गो फॉर अ लॉट ऑफ बुक्स, अ लॉट ऑफ नोट्स, अ लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। एक चीज पे स्टिक करिए जो आप पे, जिस पे आपको भरोसा है एंड उसी के साथ अपनी प्रेपरेशन जर्नी करिए। नहीं तो आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएंगे। आप एक ही राइटर को इतनी जगह से पढ़ेंगे कि आपको उसी को पढ़ने में और कंप्लीट करने में इतना समय लग जाएगा कि आप आगे वाले राइटर पे मूव करने की हिम्मत ही नहीं कर। दिस इज समथिंग दैट ऑलमोस्ट एवरी बिगिनर डू। सो इस मिस्टेक को अवॉइड करने की कोशिश करिए। इसके अलावा ऑन माय यूट्यूब चैनल यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस जिसमें मैंने बिगिनर्स के हिसाब से स्ट्रैटेजीज बताई है, यू कैन वॉच दैट। Oh, Annie Jennifer says, ma'am, please use English language. I'm so sorry. At times when I become really overwhelmed, I switch to Hindi since it's my mother tongue. So please forgive me if in case I switch between the language during the YouTube live. Okay, Abhishek Singh says, ma'am, literary criticism kaise padhe? Abhishek, for literary criticism, I would suggest you that it is the most simplest unit and the most, what should I say? You know, a unit that is like put in front of you by UGC Net. You have 25 writers. You just need to focus on those 25 critics. For example, Matthew Arnold, T.S. Eliot, then we have Mary Wollstonecraft. So all these critics, they are talking about different um, things related to what is good poetry, what is good literature, what are the characteristics of good literature, what are the characteristics of a bad literature. So what you need to do is basically you need to first get a list of all the 25-30 critics. Then you have to start looking at the main critical work that they published. For example, if we talk about Samuel Johnson, he talked about metaphysical poetry in one particular essay of his. So you have to first look at the summary of that essay so that you know what he was actually talking about. And then you have to also look at the individual concepts. So, for example, if we talk about Aristotle, he has
spoken about the unities, the three unities, right? Plato, Aristotle, all these Greek philosophers were talking about drama, what makes a good drama. So जो टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को इंडिविजुअली स्टडी करिए, उसके अंदर से जो भी कॉन्सेप्ट है, आपको तीन चार जगह से अगर पढ़ना पड़े, एक जगह से आपको समझ नहीं आए तो वो भी आप पढ़ सकते हैं. Always try to understand literary criticism and literary theory rather than mugging it up, because you cannot answer questions if you are just mugging up stuff in UGC net exam. They are not testing your memory power, they are also testing your understanding power. They want to test whether you'll become good professors or not, and a good professor needs to know things thoroughly. He can't just come into the class and tell 10 facts from a book and go away. That should not happen. Okay, moving forward to Gangadhar, he says, I know the answer of question, but at the same time confused with other options and pick the wrong option. Always face this problem, what to do. Gangadhar, a very simple solution that I would like to tell you. So whenever you are reading a question, first don't look at the options, because options will tend to confuse you. So there are two approaches. One, you look at the question, you think about the option that comes into your mind after reading the question, and then you tick mark that option. Don't look at the four options. Another approach is you look at the question, then you look at the four options, and you try the elimination technique, which I always talk about. That out of the four options, first strike off the options which, according to you, cannot be the answer. So, suppose there are four options, you have striked off two options. So, now you have to play 50-50 between the two options and see which one you go more with, like intuitively आपको क्या लग रहा है सही होना चाहिए. Try to look at both the options. दोनों, for example, there is a quotation given and there are four writers given. Now you don't know from which work that quotation is, so you cannot tell that option. But looking at the language, you can say that okay, this looks little archaic, so it would not be a modern writer's work. So if Virginia Woolf and T.S. Eliot are in the option, you strike it off. Now you're confused between Ben Jonson and William Shakespeare. So your approach should be that try to remember the writing style of William Shakespeare, try to remember some of his quotes, and try to see if that kind of style matches with the quotation given in the question. And then the same thing you do with Ben Jonson, and then you try to select the option. That's the only way. Or if you're very sure, then you just look at the question, and then in your mind you think of the answer and then mark it in the MCQ. The only problem that happens is that at times the answer that we think of is not even in the MCQ. So you're like, okay, I was that wrong, that the option, like my answer is not there even as an option. So that's really tricky. But I think elimination works for most of the students. Okay. Neelam says, is MA first semester eligible for net exam? Yes, absolutely. The only thing is that you have to get the master's degree within 2 years of clearing the net. So MA first semester, even if if you gave exam in the beginning of the first semester, you are still valid to give net exam, because in 2 years' time you need to have the master's degree. That's the only criteria. Then we have, okay, a lot of questions are there. Right. Moving ahead to Rama, please suggest me what will I do in this time because I'm stressed too much. Rama, if you're stressed, then please start meditating. Like, it's a humble request. Please start meditating. I've seen a lot of students who study so hard, but just because they are stressed, they are not able to deal with the examination paper confidently, and that can only happen if you don't train your mind. Recently, I watched a movie called Johnny English. If you've seen, it has the same character as Mr. Bean. So in that movie, Johnny English, there's this detective, and he goes to China to work on his mental power. So there's a Buddhist monk who helps him train his mind, and your mind should be the master of your body, and such kind of training was going on. And later in life, when he gets back to his work where he starts his detective journey again, there are so many episodes in the entire movie where his mind training helped him to get out of the situation and to win. So I would suggest you that just start training your mind, become a topper in your mind, only then you will become a topper in your practical life. So ensure कि आप
अगर स्ट्रेस में हैं, तो उस टाइम पे सब भूल जाइए, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किताबें दूर रखिए, 10 मिनट मेडिटेट करिए एंड जस्ट सी that positive vibe that is inside you, and then with that positive mind you start revising again. Okay, so Rama, I think I've answered your question. Okay, moving ahead. um Neha says, provide your video lectures in your course. Just listening to voice isn't helpful. Yes, Neha. So that's a good news that I'm sharing with all of you, that we have launched an animated video course wherein we are providing video lectures for each of the novels, plays, and writers. So, for example, if you're talking about a play like Waiting for Godot or Hamlet or Tempest, you will be getting animated video lecture wherein we explain the entire play using storyboards, so that there are characters and there are links and everything, so that you don't get confused, and that storyboard sticks into your head. So we have started with this video lecture course recently, and right now there's an off going on in this video lecture course. So I would request all of you are looking for preparing for UGC net for the upcoming exam, not the 13th October one, but for the other exams, please go to our website courses.arpitakarwa.com, check out the free premium videos and PDF course, wherein you will find 6 7 demo animated video lectures. See if you like the way we are teaching, and if you like it, then please go and enroll. It is going to be a game changer. We are the pioneers in India to start something like this. There is no other platform which are giving animated video lectures, and we are very proud to announce that we are doing it for the first time. I'm very very hopeful that those videos will be extremely you know helpful in your preparation journey. Also, those of you who just have like 10 days and want to revise, you can also enroll in the capsule course that we have. You'll get mock test and everything in the capsule course, so you can use that time to just give mock test and see your level of preparation, look at the mistakes and try not to make it on the day of the exam. So that can also be done. Then we have Shreya asking that, ma'am, I'm having trouble revising paper one and paper two together. If I focus on one, the other gets behind. How should I do it in last 10 days? Shreya, very simply, you have to block your time slots. So for paper one, give 1 or 2 hours every day. Rest of the day should be for paper two. So paper one को आप जो टाइम देते हैं, उसी टाइम में आपको जितना रिविजन हो उतना करना है. आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा रिविजन करने के बाद, कोई कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, उसको कभी ये नहीं लगता है कि मेरा पूरा रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया है, मुझे सब कुछ याद है. रिवीजन ऑलवेज लीव्स अ फीलिंग इनसाइड यू दैट you're still not knowing so many things. There is still so much to study, which is fine. That is normal. That's a part of the process, right? Nobody knows all of it. There is so much knowledge in the world that हम इतनी सारी नॉलेज अगर दिमाग में डालते तो याद इतना सही रहता है. सो अंडरस्टैंड, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ योर ब्रेन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एनी ब्रेन इन द एंटायर वर्ल्ड. आप इतना सारा दिमाग में डालोगे, याद इतना सही रहेगा, सब कुछ याद नहीं रहता है, बट इतना सा जो याद है ना, वही आपको एग्जाम में काम आने वाला है. सो 2 घंटा पेपर वन को दीजिए, 2 घंटे का अलार्म बजते ही पेपर वन छोड़ दीजिए. जितना रिवाइज हुआ है उतना ठीक है. शिफ्ट टू पेपर टू. यू हैव टू take this switch on and off thing as a part of your day to day revision routine. Okay. Uh, Now we have Sapna Chatwani. When will download option be available in the app? I have been waiting for it. Download option, Sanjana, our team is working on it. So I think it will be available very soon, the offline download option. I think in a month or two, our team is working on it. Since there are so many devices, we have to ensure that it works on all the devices. So once that testing is done, then we'll have this option available that you can download the videos and PDFs and you can access it offline also. Neelam says your website is such a blessing for us new students. Thank you so much, Neelam. I'm very, very glad that we are helping you out in your journey. Then we have Saima who says, I've qualified NET and GATE and I don't want to do PhD. Please help me. What should I further do?
Saima, a very good video on this topic is coming up on the YouTube channel. So just wait for it. We are going to talk about other career options that you can upload. And for now, right now, if you are looking for career options, you can go to my YouTube channel, type Arpita Karwa career after MA English. You'll get that video. There's a video, specific video, wherein I have spoken about this. I can also share the link. Let me see if that works, because I'm live right now, so I don't know if I'll be able to copy the link. Oh, yes, I can do it. All right. So I have given the link in the chat box. You can see it, Saima. Then Chanchal says, ma'am, please tell about yourself, how you started your journey as our mentor. Oh, Salma, that is going to be a full video, because I can't just, talk about my journey in like 5-10 minutes. So I think I am going to come live soon again, wherein I would ask you guys to, ask me questions about my journey, and I would love to answer it. It was a very simple journey, nothing very fancy about it. It's just that this idea came from my father, that you should start something of this own, because a lot of students are struggling with the same issue that you struggled with during your net prep. So the idea came from my dad, and then I started working towards it, and with the grace of God, I built a team which helped me day in and day out to achieve the goal, that is to teach you guys and provide you the best study content. So, in short, I can just tell you that. Remaining the detailed one, we'll do it in some other YouTube live. But thank you so much for asking that question. Um, Sanjana says, and can we enroll the premium videos in PDF several times or only once? Yes, you can enroll for it, and it will be with you for 6 months period. So आप उस 6 महीने में सारे प्रीमियम वीडियोस एंड पीडीएफ्स देख सकते हैं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्री कोर्स राइट नाउ. सो आप सबके लिए इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर अगर आप उस कोर्स में एनरोल करें. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. जस्ट वो जो 5-7 वीडियोस भी अगर वो आप देखेंगे, तो वो स्टोरीज आपके दिमाग में रहेगी, एंड दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स. तो प्लीज इंश्योर कि आप आज ही जाके प्रीमियम वीडियोस एंड पीडीएफ्स के कोर्स में एनरोल हो. ये प्रीमियम वीडियोस वो है जो मैं मेरे पेड ऑनलाइन कोर्स में देती हूँ, एंड आई एम गिविंग इट फॉर फ्री, just because last के दिन है and I want you guys to revise. Also, please ensure guys that आप लोग WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन करें, that is free of cost. उसमें हम लोग रोज नए नए लिटरेचर रिलेटेड फैक्ट्स डाल रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज इंश्योर आप व्हाट्सएप पे आज ही मैसेज ड्रॉप करें. टुडे इट्स ऑफ बिकॉज ऑफ गांधी जयंती. टुमारो my team is going to add you in the WhatsApp group, and then you'll start receiving the content free of cost. Sareen, how to read literature theory? I've answered this question, Sareen, in the beginning of the YouTube live. So if you missed it, once the live ends, you will see this as a YouTube video. आप उसमें जाके starting का video देख सकते हैं. I've answered this question. Okay, then we have Neha, I'm learning through self study. What should I do to qualify NET? Neha, self study के लिए दो चीजें important है. You should know what to study and you should know how to study. Because suppose एक writer है, William Faulkner. He's a big writer, and then you have another writer like Samuel. ओके, सो लेट मी गिव यू दिस एग्जाम्पल. अगर आप बात कर रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, सो इट इज वेरी सिंपल. You have to first know the list of the writers that you can get on arpitakarwa.com. अब हर राइटर को कितना डिटेल में पढ़ना है, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने पड़ेंगे. क्योंकि अगर आप सैम्यूल पर्चेस की बात करें एंड सैम्यूल टेलर कोलरिज की बात करें, तो आपको पता चलेगा कि दोनों को पढ़ने में आपको जितना टाइम लगाना है वो बहुत डिफरेंट है. सैम्यूल पर्चेस इज अ वेरी स्मॉल राइटर व्हेन इट कम्स टू यूजीसी नेट. उनसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते. तो आप जब प्रीवियस ईयर पेपर्स में पढ़ेंगे तो आपको पता
चलेगा कि उनसे उनके बुक्स के सिर्फ नाम पूछे जाते हैं, उनके बुक्स के अंदर की समरीज या एनालिसिस नहीं पूछा जाता, बट सैमुअल टेलर कोलरिज के पोएम्स के बीच की लाइनें पूछ ली जाती है बिकॉज ही इज अ बिग राइटर, राइट? Very important for the romantic movement, very important when we look at the syllabus of UGC NET in total. So आपको सबसे पहले what to study की जो लिस्ट है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट arpitakarwa.com पे मिलेगी, आप वहां से निकाल लीजिए। और फिर हर राइटर को कितना पढ़ना है इसके लिए यू हैव टू लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि उस राइटर से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक नोट्स। सो हमने यही किया है, हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें भी हम यही करते हैं कि हर राइटर को हम पहले पढ़ाते हैं एंड देन उसके बाद में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उस राइटर से उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं, सो दैट द स्टूडेंट एग्जैक्टली नोज कि अच्छा इस राइटर को इस तरीके से हमें याद करना है या इतनी इंफॉर्मेशन ही इसके बारे में याद करनी है, राइट? सो आई थिंक द सेम स्ट्रेटजी विल वर्क फॉर यू ऑल्सो। राइट, देन okay, so there are so many other questions. Um, there are certain people who are writing the question in Hindi, but like typing it in English, so it becomes a little difficult to like read it and try to comprehend very quickly. Okay, so then we have Simran who says, "Ma'am, I always get confused in comprehension type questions and हमेशा wrong हो जाता है. What to do?" Comprehension type questions का मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था, and I think I discussed this in the Zoom live session also कि comprehension question में पहले जो passage है या poem है उसे मत पढ़िए, सबसे पहले questions पढ़िए। क्वेश्चंस में जो की फ्रेजेस है ना जो आपको पैसेज में ढूंढने होते हैं, उन की फ्रेजेस को आप लोग अपनी रफ जो शीट आपको मिलती है एग्जाम में उसमें लिख लीजिए। And then after reading the 5 questions, you go to the passage and you read the passage and try to find those keywords in the passage। और जैसे ही आपको वो कीवर्ड मिले वहीं रुक जाइए, उसके आगे पीछे की लाइनें वापस पढ़िए, गो बैक टू द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट देन एंड देयर। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले पैसेज रीड करते हैं, पूरा ऊपर से चला जाता है, कुछ समझ नहीं आता, 5-10 मिनट आपने वेस्ट कर दिए। अब आप क्वेश्चंस करते हैं, फिर आप वापस से पैसेज पे जाते हैं, फिर आप वापस पढ़ते हैं, फिर आप वापस क्वेश्चन पे आते हैं। यू कीप ऑन प्लेइंग दिस टू एंड फ्रो गेम। इससे बेटर ये है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़िए, जैसे ही वो क्वेश्चंस पढ़ के आप पैसेज पे जाएंगे, नाउ यू विल हैव अ एंड गोल इन माइंड कि अब मुझे ढूंढना क्या है पैसेज में, मेरे पास कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को ढूंढिए, जैसे ही कीवर्ड मिले वहीं पे रुकिए, पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करिए एंड देन read the passage, like complete reading the passage. Okay. Right. Snehasi says, "Will this class be recorded, ma'am?" Yes, you like once the live is over, it will be available on the YouTube channel, so you can go and play it again. How many times at maximum one should revise before the exam? Ask Prerna Kamble. Hi, Prerna. Prerna, very good question. I would suggest you at least 3 to 4 times. Revision is very crucial. मैंने 7 बार किया था, and I know कि 7वीं बार के revision के बाद I was so confident कि मुझे लगा था नेट तो क्लियर होगा ही होगा मेरा. So that confidence comes only after multiple revisions. So मेरे हिसाब से कम 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना चाहिए. रिवाइज कैसे करना है इस पे आई हैव मेड प्लेंटी ऑफ वीडियोस, मतलब यूट्यूब पे आप अर्पिता करवा रिवीजन डालिए, आपको इतने सारे वीडियोस मिलेंगे, आप 3-4 भी देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि रिवीजन का प्रॉपर टेक्निक क्या है, एंड देन यू कैन यूज दैट टेक्निक एंड रिवाइज. Umesh says, "Ma'am, is it necessary to go into the detailed study of American literature or surface level?" Again, Umesh, I would like to go back to the point that I just stated a few minutes back in the video कि आपको अमेरिकन में लिस्ट ऑफ राइटर्स निकालना है जो आपको मेरी वेबसाइट से मिलेगा। उस लिस्ट में से आपको देखना है कि कौन से राइटर पे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे अगर हम अमेरिकन लिटरेचर की बात करें, सो अमेरिकन लिटरेचर में देयर आर a lot of writers. I can't even like tell you ऐसा डिटेल में कितने सारे राइटर्स हैं जिन पे सिर्फ उनकी बुक के नाम आते हैं, दैट्स इट। एंड देन देयर आर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट राइटर्स जैसे मार्क ट्वेन। अब मार्क ट्वेन का हकलबेरी फिन में से अंदर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पूछेंगे हकलबेरी फिन, एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन किसने लिखा, बिकॉज दे नो दैट अ स्टूडेंट वुड नो इट, सो दे हैव टू क्रिएट द डिफिकल्टी लेवल, ओके, दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। सो इसीलिए आपको अमेरिकन में देखना पड़ेगा कौन से राइटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे डिटेल में क्वेश्चन आ रहा है उनको डिटेल में पढ़िए, जो राइटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है जिनके सिर्फ वर्क्स के नाम आ रहे हैं उन वर्क्स के नाम को पढ़िए। ऑल्सो ये चीज बहुत होती है एग्जाम के अंदर कि जो मेजर राइटर्स हैं
उन मेजर राइटर्स से वो लोग उनके जो मेजर वर्क्स है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट let's say Samuel Beckett. So Samuel Beckett का Waiting for Godot is a major work. Okay, he's known for that work. So Waiting for Godot से बहुत in depth question आएंगे. उसके कोई act scene, कोई quotation, opening closing line इस टाइप का आएगा. और वहीं पे Samuel Beckett का कोई minor work है, सिर्फ नाम जिसका आपको याद रखना है, उसका आपको सिर्फ नाम याद रखना है, उसकी समरी में नहीं जाना. सो ये डिस्टिंक्शन आपको बनाना पड़ेगा. मेजर राइटर के मेजर वर्क्स को डिटेल में पढ़ना है, मेजर राइटर के माइनर वर्क्स के सिर्फ नाम याद रखने हैं, या कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम है वो याद रखना है. माइनर राइटर्स के आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्क्स और उनकी 1 लाइन 2 लाइन जितनी प्लॉट समरीज याद रखने, या मेजर कैरेक्टर्स के नाम याद रखने. दैट्स इट. ओके, मूविंग अहेड. Rini Rubina Singh says, "Ma'am, how to study British literature thoroughly, how to memorize works and years, and there is also difficulty in memorizing the characters' names. So, how to memorize that?" I know British literature is very, very vast. हम स्टार्टिंग का पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हम जैसे ही विक्टोरियन तक पहुंचते हैं हमें पता चलता है एलिजाबेथन पूरे दिमाग से उड़ गया, बिकॉज इतने सारे कैरेक्टर है, सब कुछ मिक्स एंड मैच होता है. इसीलिए सबसे पहले 2 चीजें आपको करनी जरूरी है. नंबर 1, जब भी कोई नॉवल, प्ले, पोएट्री पढ़ते हैं उसके डायग्राम्स बनाइए. आपके दिमाग में डायग्राम्स ज्यादा देर तक सेव होते हैं, सो उन सब के डायग्राम्स बनाइए. कोई भी चीज को सिर्फ लिख के याद करने की कोशिश मत करिए. रट्टा मारने से ज्यादा दिन तक दिमाग में नहीं रहेगा. इसीलिए हम लोग एनिमेटेड वीडियो कोर्स लेके आए, बिकॉज ये स्टूडेंट्स के साथ इशू आ रहा था. मैं तो अपनी स्टडी जर्नी में हमेशा हर चीज का एक माइंड मैप बनाती थी. आप मेरे जो प्रीमियम वीडियोस एंड पीडीएफ वाले कोर्स में जब जाएंगे तो उसमें भी पीडीएफ में आप देखेंगे हर पीडीएफ के नीचे मैंने माइंड मैप दे रखा है. सो वो माइंड मैप से क्या मदद होती है कि आपको कैरेक्टर्स की इमेजेस दिमाग में फिट हो जाती है, तो एटलीस्ट आप कैरेक्टर और स्टोरी नहीं भूलते. ओके, तो फर्स्ट थिंग तो ये करिए कि स्टार्ट मेकिंग माइंड मैप्स या कैरेक्टर डायग्राम्स व्हेनेवर यू आर लुकिंग एट एनी नॉवल, प्ले और पोइट्री. एंड सेकेंडली, रिविजन इज इंपॉर्टेंट. ऐसा मत करिए कि आप पढ़ते जा रहे 15-20 दिन तक कंटिन्यूसली नई इन्फॉर्मेशन डाली और 20 दिन बाद आप वापस से फर्स्ट डे की इन्फॉर्मेशन रिवाइज करने गए. भूल जाएंगे. मैं हमेशा अपने हर वीडियो में एक फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बताती हूँ. आज जो पढ़ा उसे कल रिवाइज करिए, उसके बाद 1 हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद. ये रिवीजन साइकिल होना चाहिए. अगर आज आपने कुछ पढ़ा उसे आप डायरेक्टली 15 दिन बाद रिवाइज करेंगे तो दैट विल बी एज वेस्ट, लाइक दैट वुड बी एब्सोल्युटली वेस्टफुल. प्लस प्रॉब्लम क्या होगी कि आज आपने जो पढ़ा 15 दिन बाद आपको 0% याद होगा. तो आज जितनी मेहनत डाली है ना, वापस उतनी मेहनत आपको 15 दिन बाद डालनी पड़ेगी. इससे बेटर ये है कि आज पढ़िए, कल रिवाइज करिए, क्योंकि कल आपको 70% चीजें याद होगी, 30% भूलेंगे. तो आपको बस वो 30% याद करनी है. फिर 1 हफ्ते बाद आप फिर से 50 या 70% तक याद रखेंगे, 30% भूल जाएंगे. फिर वापस से 30% ही याद रखनी है. अगर आज कुछ पढ़ा और उसको डायरेक्ट 15 दिन बाद पढ़ा, सब कुछ भूल जाएंगे. सो डोंट डू दैट. ओके, it was a lovely question, Rini Rubina Singh. Thank you so much for asking it. Okay. Ankita Rai says, "Guys, please like the session. It's also very crucial." Oh, thank you so much, Ankita. Then we have Manju. I am very confused for paper 1 because I'm preparing paper 1 in Hindi language. KVS Madan book is enough. Manju, I would not like to comment on any book because देखिए हर स्टूडेंट को अलग अलग बुक समझ में आती है. देर इज नो यूनिवर्सल बुक. अगर ऐसी होती तो इतने सारे ऑथर्स बुक नहीं लिख रहे होते ना. तो आपके लिए मैं ये बोलूंगी, आप पेपर 1 को हिंदी में प्रिपेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है. आपका बस एंड गोल ये होना चाहिए कि हर टॉपिक को पढ़ने के बाद किसी भी बुक से आप पढ़िए, उस टॉपिक पे जितने भी नेट में क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके देखें कि आप क्या वो सॉल्व कर पा रहे हैं. सो देयर इज अ बुक बाय हरप्रीत कौर, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की. उसमें आपको है ना हर यूनिट के बाद के आंसर्स, क्वेश्चंस मिलेंगे. जैसे एक यूनिट समझाई उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड देन उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे यूजीसी नेट के क्वेश्चंस वो एक साथ देते हैं. सो वो ऐसा कोई बुक आप ले लीजिए. मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी पर्टिकुलर बुक, इट इज अप टू यू. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैंने ये बुक देखी है जिसमें इस तरह का पैटर्न है. तो उससे क्या बेनिफिट होता है कि आपने एक यूनिट पढ़ी एंड उसके बाद में आपने उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको ये समझना कि आपने जो पढ़ा वो रेलेवेंट था या आपको कितना याद है. दोनों चीजें फिगर आउट करना.
तारुषी सेज हाउ टू प्रिपेयर फॉर पेपर वन आई एम बिगनर। तारुषी, आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसपे मेरे को पूरे 20-25 मिनट बोलने की इच्छा होती है, बट बिकॉज ऑफ द टाइम क्रंच अगर मैं इसी टॉपिक पे बोलती जाऊंगी तो बाकी सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे यार ये तो मैम टॉपिक से भटक गई। सो तारुषी, पेपर वन पे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज है, आप वो देखिए, आपको पता चल जाएगा। मैंने सब में बता रखा है कि कैसे प्रिपेयर करना है, बट बिगिनर के लिए, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन पूछा है, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट पेपर वन के लिए आपको सिर्फ ये देखने हैं कि जो टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उनमें से कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। उनमें 5 ऑन 5 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन सही करने का कोशिश करिए। एंड जो टॉपिक्स आपके वीक एरियाज है, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल वीक एरिया होता है, मैथमेटिकल एंड डीआई एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसमें यू कैन ट्राई कि आप थोड़ा रिलैक्स्ड वे लें। आप उसमें 5 में से 2 क्वेश्चन सही करने का और टारगेट लें। सो आई थिंक ये एक टिप आपको हेल्प करेगी। अंकिता राय सेज आई वांट टू नो अबाउट योर क्रैश कोर्स मैम। अंकिता, क्रैश कोर्स हम लोगों का 1 मंथ का है। अभी जो नेक्स्ट 10 डेज आपके पास है उसके लिए कैप्सूल कोर्स वुड वर्क, सो यू कैन गो टू द वेबसाइट, यू हैव ऑल द डिटेल्स अबाउट द कैप्सूल कोर्स ऑन वेबसाइट courses.arpitakarwa.com पे आप जा सकते हैं। यू विल फाइंड द कैप्सूल कोर्स, पूरा लिस्ट ऑफ राइटर्स गिवन है कि हम क्या-क्या पढ़ाते हैं। मेरे हर कोर्स में, कोई भी आगे भी जो कोर्सेज लॉन्च होंगे, आई ऑलवेज इंश्योर कि हर कोर्स के साथ में मैं आपको दे रही हूँ लिस्ट ऑफ राइटर्स जो हम उस कोर्स में कवर करते हैं, सो दैट आप कोर्स खरीदने से पहले आपको पता हो कि अच्छा ये चीजें हमें मिलेगी। आई वांट दैट टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट। हम क्या आपको कमिट कर रहे हैं और आपको क्या मिल रहा है, दैट हैज टू बी एब्सोल्युटली सेम। इफ वी आर सेइंग कि हम आपको ये सारे राइटर्स पे इतने वीडियोस देंगे, सो वी आर गिविंग यू दैट, इतने पीडीएफ देंगे, इतने मॉक टेस्ट देंगे, तो वो सब कुछ आपको डिस्प्ले करके मिल जाता है। सो आई थिंक दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एंड इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन call my team, they'll love to help you out. My team is very very helpful, they love to talk to students, know उनको क्या दिक्कत आ रही है, and try to help them in as convenient way as possible. um Okay, Shivani says how to remember the authors and works and also their group they belong to. So authors and works का मैंने आपको जैसे बताया, works के लिए आपको डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, प्लस आप छोटे-छोटे स्टिकी नोट्स बना सकते हैं जिसमें आप एक ऑथर का नाम लिखिए, उसके सारे वर्क्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए और उसको अपने रूम के वॉल पे पेस्ट कर दीजिए। आपका वॉल ऐसे गजनी का जो वॉल नहीं था कि वो भूल जाता था, आमिर खान की जो मूवी थी कि उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी का प्रॉब्लम था कि वो भूल जाता था सारी चीज़ें, तो उसने सब कुछ स्टिकी नोट्स अपनी दीवार पे लगा रखा था। तो सेम उसी तरीके से आपको भी इमेजिन करना है कि हम सबका दिमाग एग्ज़ाम टाइम पे गज़नी बन जाता है, हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, इसलिए वो सारे राइटर्स की लिस्ट अपने दीवार पे चिपका लीजिए और दिन भर आते-जाते उन्हें देखिए, इतनी बार देखिए कि वो जो स्टिकी नोट्स की डिज़ाइन है ना, वो आपके दिमाग में स्टिक हो जाए। तो एग्ज़ाम टाइम पे आप जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा ना, आपको वो स्टिकी नोट एज़ इट इज़ दिख जाएगा अपने दिमाग में। मेरे साथ तो लिटरली ऐसा हुआ था। मैंने इतनी बार रिवाइज़ करी थी चीज़ें कि मेरे दिमाग में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता था और मेरी वो जो नोट्स की कॉपी है, उसकी इमेज सामने आ जाती थी कि हाँ, इस नोट्स की कॉपी में यहाँ मैंने ये चीज़ का आंसर लिख रखा था। सो वो लेवल आपका प्रिपरेशन का होना चाहिए। अम, ओके। Mayur Salvi says your mind maps are awesome. We can revise through them thoroughly. Thanks. Thank you so much, Mayur. Then, oh, okay, I just went down. I'm so sorry. Um, Angel Eyes says, please give us link of premium videos. Sure, Angel. Just allow me a moment. मुझे खुद को link आपको निकाल के देना पड़ेगा because I have to open it in a new tab and then try to give it. Okay. Okay. So here it is. मैंने आपके साथ में लिंक शेयर किया है प्रीमियम वीडियोस एंड पीडीएफ वाले कोर्स का, सो यू कैन गेट द लिंक। मैंने मेरे चैट बॉक्स में आपको मेरे नाम से दिख जाएगा।
ठीक है, उसमें अभी ऑडियोज़ लिखा हुआ आ रहा है जो लिंक है, बट उसमें वीडियोज़ भी है। उसमें डेमो वीडियोज़ में हमने एंग्लो सैक्सन के वर्क्स, जॉफ्री चौसर, एलिज़ाबेथन एज, जी ऑफ माल्टा, विलियम शेक्सपियर, इन सब के वीडियोज़ डाले हैं। एनिमेटेड वीडियोज़ है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। प्लस आपने एक बार पढ़ा तो आपको याद आ जाएगा। ऑल्सो आई वुड वांट टू नो, आप में से जिन-जिन लोगों ने मेडिटेट करना चालू किया है, जब मैंने आपको पिछली बार लाइव क्लास में बताया था, प्लीज़ पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप में से कितनों ने मेडिटेट करना चालू किया है, और जिसने नहीं किया है, आई एम वेरी 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 एंग्री विथ यू गाइज। आप लोगों को करना चालू करना चाहिए। मतलब आई एज अ टीचर कैन जस्ट टेल यू कि इसका इमेंस बेनिफिट मिलेगा आपको 13 तारीख को। यू गाइज विल लिटरली थैंक मी फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट कि अर्पिता मैम ने ये बताया, और इससे हमारे पेपर में हम वो 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए कॉन्फिडेंटली। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू, कुछ नहीं होता 10 मिनट दिन का। अपने 10 मिनट तो यहाँ वहाँ घूमने करने में ही खराब हो जाता है। 10 मिनट के लिए मेडिटेट करिए। इफ यू वांट आई कैन आल्सो शेयर द लिंक ऑफ माय मेडिटेशन वीडियो, क्योंकि कई बार आप लोग भूल जाते हैं, सो यू कैन जस्ट सेव दैट वीडियो। कॉपी लिंक एड्रेस। आई एम सो सॉरी अगर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दे पा रही, मैं काफी मल्टीटास्क कर रही हूँ, सो आई हैव टू कीप स्विचिंग द टैब्स। ओके, राइट। Pandit 11 says, ma'am, do you also teach paper one? Yes, Pandit, there are paper one video courses available on our website, courses.arpitakarwa.com. You can check that out. How much percentile is needed to crack UGC? That 99 percentile is what you should aim for. Um, can you suggest some source where we can find most of the previous year papers or any book? Mayur, आपको book क्यों चाहिए? It's there available free of cost on our website. Question paper along with answer key. आप arpitakarwa.com पे जाएंगे. I'll give you the link of that as well. तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स, आप प्लीज एक एक बार क्वेश्चन पेपर्स देखिएगा, बिकॉज क्वेश्चन पेपर्स देख के ना आपको काफी सारी ऐसी चीजें पता चलेगी जो अभी तक आपकी प्रिपरेशन में मिस हुई है, तो एटलीस्ट आप उसको लास्ट मिनट याद कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू द लिंक, मैंने पेपर 1 का दिया, बट आप जब वो खोलेंगे ना तो पेपर 2 पेपर 3 के भी आपको क्वेश्चन पेपर्स वहीं दिख जाएंगे। Sonali says, ma'am, please tell me how do I get the free notes from the 10-day premium videos? So free notes आपको उसी में मिलेगा। आप जैसे ही प्रीमियम वीडियोस वाला कोर्स सब्सक्राइब करेंगे ना, मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट बस आपको एनरोल का बटन दबाना है, आपको उसी में नीचे पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। तब Tapti Mukherjee says that, hi ma'am, your website and YouTube videos really helpful. Thanks a ton. Last time questions of second shift were absolutely unpredictable, which gave a feel like preparation is not enough. How to deal? See, again, I would like to say Tapti that unpredictable नहीं होते हैं questions. It's just that कि आपने जो preparation करी है, या तो आपने उस preparation को right तरीके से नहीं किया, कि आपको, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी दोनों पता होना चाहिए, किस राइटर को कितना पढ़ना है, दोनों चीज पता होनी चाहिए। तो शायद या तो वो मिसिंग रह गया, या फिर आपने इनफ रिविजन नहीं किया, जिससे आपने काफी चीजें पढ़ी है बट आपके दिमाग में वो चीजें एग्जाम डे के दिन नहीं थी। सो दोनों चीजों पे काम करिए। यू शुड नो which writer to study and how much to study and what to study in that writer। ठीक है ना? कोई भी एग्जाम है उसमें आपको हर राइटर को अलग तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। आप सबके लिए सेम स्ट्रैटेजी बना के नहीं रख सकते हैं। मानसी कुमारी says, please give some tips in paper one also। paper one के लिए मानसी, I have a lot of videos on YouTube, so you can go and check that out, किस तरीके से attempt करना है। there's also a video wherein I have spoken about कि MCQs पे आपको आंसर्स कैसे मार्क करने हैं। so please वो वीडियो भी मेरा जरूर देखिएगा, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसमें शेयर करी है। Okay, then we have Nivedita ma'am. Last year I was in shift 2. Most questions were unknown to me. Nivedita, I would like to tell you कि मेरे पास ये information नहीं आई, because मेरे जो online course के students थे, they were very happy and they said that paper वो आया जो उन्होंने already online course में पढ़ा था। So जितना मुझे लगता है कि आपको जब भी questions unknown लग रहे हैं, that is only because आपकी preparation strategy is not matching the UGC paper pattern. So please ensure कि आप उसको थोड़ा change करें।
Okay. Mosmi Khatun says revision is the key factor. Absolutely, yes, Mosmi. I totally agree. Um, Nabanita says, "Good afternoon, ma'am. Can you do live rapid fire question round in last 5 days?" Nabanita, I don't believe in live rapid fire questions. I'll tell you why. यूजीसी नेट एग्जाम इज नॉट अ टेस्ट ऑफ स्पीड। वो ये नहीं टेस्ट करना चाहता कि आप कितनी जल्दी क्या आंसर देते हैं, बिकॉज जल्दीबाजी के चक्कर में हम मोस्ट ऑफ द टाइम गलत आंसर देते हैं। हम इतना पैनिक में आ जाते हैं कि हम पूरा क्वेश्चन को ढंग से सोचते नहीं है। मेरा अप्रोच बहुत डिफरेंट है। इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर स्पीड। दिस एग्जाम इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर स्पीड। आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1.5 से 2 मिनट मिलता है। अगर आप पेपर 2 की बात करें तो आप 1 डेढ़ मिनट लगा के हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने पेपर 1 टाइमली खत्म किया है तो। और अगर आपने पेपर 1 में ज्यादा टाइम भी दिया है तो भी 30 सेकेंड्स मिलता है। एक थियोरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड्स इज टू मच। आपकी गलती कहाँ होती है कि आप जल्दी में सॉल्व करने के चक्कर में आप क्वेश्चन पेपर को ढंग से नहीं पढ़ते, आप क्वेश्चंस को ढंग से नहीं पढ़ते, और नॉट और इन वर्ड्स को आप स्किप कर देते हैं एंड आप गलत सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं, गलत आंसर करके आ जाते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ, आप हर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए, ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, फिर एमसीक्यू पे जाइए। जल्दी करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आता है उस क्वेश्चन को जल्दी करके अगर आपने खराब किया, तो दैट इज़ द वर्स्ट थिंग एनी स्टूडेंट कैन डू। इसीलिए आई एम वेरी, वेरी अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ लाइव रैपिड फायर क्वेश्चंस। इससे सिर्फ स्टूडेंट परेशान होता है, वो जल्दीबाजी में कुछ भी बोल देता है। दैट इज़ नॉट हेल्पफुल एट ऑल। आपको 30 सेकंड्स मैं दूँगी, आप एक क्वेश्चन को देखिए, आप मेरा जब जो क्वेश्चन बैंक फॉर फ्री है आप वो ज्वाइन करेंगे, या मॉक टेस्ट का जो कोर्स है हमारे पास वो ज्वाइन करिए। आपको टाइमर दिख रहा है, आपको पता है मेरे को 2 घंटे में पेपर 2 देना है। 2 घंटे में हर क्वेश्चन के पास आपके पास इतना समय है। ठीक है, आपके पास 120 मिनट से आपको 100 क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, आप सोच के देखिए, 1 मिनट से भी ज्यादा आपको एक क्वेश्चन में मिल रहा है। आप उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, चारों ऑप्शंस को पढ़िए, एलिमिनेशन करिए एंड फिर राइट आंसर पे जाइए। और एक क्वेश्चन को इस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है कि हम वापस रिविजन नहीं करेंगे उस क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 15 सेकंड में फटाफट एक क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर वापस उसको रिविजन करने आते हैं और फिर वापस से पढ़ते हैं, फिर वापस फटाफट पढ़ते हैं। समझ नहीं आता है, उनको लगता है पुराना वाला आंसर गलत है, उसको हटा के दूसरे को कर देते हैं, खिचड़ी बना देते हैं पेपर की। इससे अच्छा 1 मिनट दो, एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, 2 बार पढ़ो, ऑप्शंस को 4 बार पढ़ो एंड देन मार्क करो। दैट इज द रियल थिंग। ओके। Ankita says, "Ma'am, you have lost your weight." Oh yes, I'm working on that. Thank you so much, Ankita. Um, okay. Then there are some other comments. Chanchal says, "Ma'am, please make your next video with your entire team and your journey." Chanchal, that's a little difficult because I'm in London right now. मेरी टीम इंडिया से काम कर रही है, so हम सब अभी तो वर्चुअली ही मिलते हैं Zoom पे काफी बार. So I'm not very sure कि वो कब हो पाएगा, but definitely I am planning to do something of that sort. Pooja says, "Ma'am, your videos are very helpful." Thank you so much, Pooja. Uh, then Nitika says, "Postmodernism major writers, ma'am, please suggest." नितिका, पोस्ट मॉडर्निज्म की पूरी लिस्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है। arpitakarwa.com पे जाइए, मॉड्यूल 1 चैप्टर नंबर 12 पे जाइए, सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। देन दिव्या आर्या, वेयर टू गेट एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दिव्या, हम लोगों का जो मॉक टेस्ट सीरीज है ना, आपको courses.arpitakarwa पे मिलेगा, उसमें हर हमने प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस भी उसमें लिए हैं। और जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, उसमें काफी सारे मॉक टेस्ट, आई थिंक वी हैव मोर देन 6000 क्वेश्चंस। सो 6000 क्वेश्चंस के हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है, व्हाट इज द रीजन। अगर उसके लिए आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, वी हैव गिवन दैट एक्सप्लेनेशन। तो आप वो जो क्रैश कोर्स ले सकते हैं, या फिर आप मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं लास्ट 10 डेज में, एंड आप सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं विथ डिटेल्ड एनालिसिस। Neha says, "Ma'am, animated videos are of English literature or for paper one?" Paper one and English literature both. मतलब I don't know, this animated video thing was so dear to my heart कि ये जब आ रहा है, so I'm very, very happy. And ये English literature के students के लिए है। सारे lectures, विलियम शेक्सपियर हो, टी.एस. एलियट हो, मैथ्यू आर्नल्ड हो, हर राइटर के वर्क्स, उनके पोएट्री, प्लेस, ड्रामास,
नॉवेल्स, हर कुछ को मैंने एनिमेटेड वे में बताया. इट्स अ वेरी वेरी लेंदी कोर्स, एंड वो कोर्स ऐसा है कि अगर आपने उस कोर्स को ढंग से पढ़ लिया, एक एक बार भी सारे वीडियोस देख लिए ढंग से, आई कैन गारंटी यू कि आपका नेट क्लियर हो जाएगा. वो इतना डिटेल कोर्स है. एंड राइट नाउ वी हैव नॉट इंक्रीज द प्राइसेस बिकॉज आई नो कि स्टूडेंट्स को एनिमेटेड वीडियोस मेरा देने का मन था, तो फॉर द फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स हम लोग उसको सेम प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं. सो यू कैन गो एंड चेक आउट. इसीलिए मैंने आपको बोला प्रीमियम पीडीएफ्स एंड वीडियोस का जो कोर्स है, एक बार जरूर चेकआउट करिए. एंड आई वुड वांट टू नो योर रिव्यूज एज वेल. Then I think it's been about 40-45 good minutes that we've been live. So I would just take one or two more questions and then I would like to end the live video. We would definitely meet very soon, so you can again put up your questions and I would love to meet you. Please, तब तक I would request you meditate. देखिए, meditation से मेरे को कोई benefit नहीं है. The reason why I'm stressing it so much is because I really want कि आप लोगों की मेहनत वेस्ट ना जाए. आप लोगों ने जो मेहनत करी, अगर आप उसमें थोड़ा सा अपना स्ट्रेस और टेंशन को कम कर लेंगे, कॉन्फिडेंस को ऐड कर लेंगे, तो आप अगर अभी 70% प्रिपेयर्ड है, तो दैट विल शूट अप टू 95%. So those 25% you can only get through meditation. You cannot get by just mugging up data again and again. I've seen so many students जो fully prepared होते हैं, but just because they are low on confidence, they are stressed out, वो यही सोचते रहते हैं हमने ढंग से करा नहीं, हमने रिवाइज किया नहीं, नेट नहीं हुआ तो क्या होगा. इन सब चीजों की वजह से वो जितना प्रिपेयर्ड है उतना स्कोर नहीं कर पाते, राइट? सो प्लीज मेडिटेट. Pooja says, ma'am, your videos are very helpful. Thank you so much. Thank you, Pooja. I'm very, very grateful. Um, Satyam says, what did you do to improve your low mock scores? सत्यम, मॉक स्कोर्स को कैसे improve करें, इसके लिए एक YouTube वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी. If you can go to my channel, you will find out there's a video that what to do when your mock test scores are not increasing. इस टाइप से उसका कुछ टाइटल है. So you can go and check it out. आप अगर अर्पिता करवा what to do to if your mock test scores are not increasing टाइप करेंगे ना YouTube पे, you'll get that video. मैम, वेयर टू गेट राइटर्स वर्क एंड डेट थीम एट वन स्टॉप? राइटर्स के वर्क्स तो दर्शन आपको कहीं पे भी एक जगह नहीं मिलेंगे. वैसे तो विकिपीडिया में आपको हर राइटर को आप जब सर्च करते हैं तो नीचे मिलता है, बट उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं पढ़ने, कौन से कितने ज्यादा डिटेल में पढ़ने, ये आपको सिर्फ प्रियास्टी या पेपर्स से ही पता चलेगा, या फिर अगर आप कोई मेंटर के अंडर पढ़ रहे हैं जिसने नेट क्लियर किया है, वो आपको बता पाएंगे. Pooja says, ma'am, what are you doing nowadays in London? Pooja, I am actually working on the animated video course right now. Uske alawa, there is so much happening on the on our website. So many new courses are coming in. आप लोगों के लिए बहुत सारे surprises हैं in the month of October and November. We are working on something very very amazing. So वो सब चल रहा है. Anandrila Mitra. Okay, I'm so sorry if I'm not pronouncing your names right because मेरे को इतना text पढ़ना पड़ रहा है ना साथ साथ कि I'm not able to focus so much. Plus, the text size is very small on the screen. So she says, I'm very inspired by your videos, ma'am. I'm pursuing my MA in English literature, yet learning from your audio lectures. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I'm very, very glad that, you are getting help from the lectures. Mayur says, thank you for putting up so much effort. I can certainly say you did it perfectly, and I wasn't able to complete the online course as I work too, but I will re-enroll and complete it fully. Keep smiling. Thank you so much, Mayur. Wishing you all the best, and I really wish कि आपका जो thirst for knowledge है वो हमेशा बढ़ता रहे, and you keep learning regularly. Okay, so I think we are done. There were a few other questions which I could not answer, but don't worry. You can put these questions in the comment section, and my team and I would definitely answer it. So it was lovely interacting with all of you. It's 8:30 in the morning right now in London. I think it's about 1 o'clock in India. So
Good afternoon to everyone. And as I always end my videos with my favorite line, that's it from my side for these video lectures. I will meet you very soon in my next video lecture. Till the time we meet next, happy learning, keep loving literature, and stay tuned to arpitakarwa.com. Thank you so much, guys. Lovely interacting with you, and happy Gandhi Jayanti to all of you. All the best for the upcoming NET exam. Wish you all the best, and I really wish that God will guide you and will make sure that your dreams come true. Thank you. Bye bye.